हाँ तो बड़ी क्या ये खराब हो गया, चिपक गया पूरा। खराब हो गया, पूरा खराब हो गया। क्या है ये सब, किसका है? ये डिप्लोमा का है। डिप्लोमास है? हाँ आखिर सारा? नहीं हाल डिप्लोमा नहीं बरगा सारा डिप्लोमा से सब। हाँ सब डिप्लोमा 74 से। जो खराब हो गया वो बाजू में निकाल ताकि जो अच्छा होता है वो बच जाएगा। उस टाइम क्या है, 2-2 3-3 कॉपी बना देते, एक मद्रास का फेस्टिवल हो गया, एक दिल्ली को हो गया। उस टाइम एक पे दो प्रिंट का एक तो प्रिंट मिलता था हमको पूरा। ये जो यहाँ से पकड़ के सब खराब हो गया, इधर भी नहीं गया। ऐसा पहला भी ये किया, फेंक दे। अब जितना मिला उतना। हाँ ऊपर कब ले हाँ लेते हैं नहीं यार नहीं ये नहीं चलता। वो स्टाफ वाले ने बनाया, स्टाफ का फिल्म है। हाँ सेल्फ पोर्ट्रेट। सेल्फ पोर्ट्रेट। एक लकी ड्रॉ है, चाय के लिए लकी ड्रॉ है। हाँ तो हर एक जन का मतलब हर एक नाम का चिट्ठी रहता है उसके अंदर। ये बक्सा है, इसमें हर एक लोगों का चिट्ठी रहता है हर एक अच्छा। का। और वो उसका एक निकाला जाता है, उसमें जिसका नाम आएगा वो चाय पिलाता है। और उसका बाद में वापस 1 महीने के बाद नंबर, मतलब जैसा नंबर आएगा वैसा पिलाता है। रोज एक चिट्ठी निकालते हैं कि आज तेरी चाय पिलाने का। अच्छा। और 1 महीने में एक बार आता है सबका नंबर, 1 महीने में एक बार आता है नंबर। तो जब तुम्हारा निकालिया आगे भाई से नंबर आया पक्का। क्या नंबर है? दिखाओ नंबर जी दिखाओ। का नाम निकला हुआ है चिट्ठी में, तो पालवी जी अभी सबको चाय पिलाएंगे। चाय पिलाएंगे। वाह पालवे कुठे गेलता तुम्ही? गेला का मी? आता तुम्ही गेलेले दिसले इथं. अंदाज बघा. ओके चलो भाई चलो चलो लक्षात तू चला चला चला
थोडं हे कमी करा ना त्याने. नका मारू ना काय बोलावं. अरे ये तो बहुत अच्छा है। कुछ चैनल देखोगे तो आजकल पौधे निकले हैं, पौधे देख ये बसलं कुठला बैटरी लगा दी चलता हुआ देखिए दूसरा लगा उसमें तो और टाइट जाएगा द्वार में द्वार उघड ले अभी चाय पीने जाएंगे सर. थैंक यू. प्लीज चाय 11:30 बजे. नाही कर दामले का कभी याद आएगा मुझे, दामले जी का. हाँ, तो उनका वो गोपाल कृष्ण फिल्म है, गोपाल कृष्ण, तो उसमें का थोड़ा गाना मैं गुनगुनता. हाँ, चला जाओ गोकुळाला हासत नाचत जाओ, ऐसा मैं गाना गुनगुनता. और यही संदम का याद आया. हाँ, तो मैं वो गाना गुनगुन करता है, आँखों के सामने शांतम भी दिखता है. गीत गाया पत्थरों ने जीवन की ताल पर, धड़कन की चाल पर, तूने पुकार का रंग भरे प्यार का गीत गाया, ऐसा मैं गुनगुनता है. कौन सी पिक्चर का है गाना? ये गीत गाया पत्थरों ने. कैसे देहांत हुआ था दामले जी का? दामले वो क्षय रोग बोलता था. क्षय रोग मालूम, रोग पहला पुराने ज़माने में होने का. इतिहास में. हाँ, वो पेशे विषय वो के करी जाए ना, उधर कुछ होने का. और वो आदमी कभी नहीं, खांसी आने का हमेशा. ऐसा करके बहुत डॉक्टर हो गया पर कुछ नहीं हुआ. आखिर को पूरा 1 वर्ष गुजर गया दामले. और शांताराम जी का, उनका कैसे? नहीं, वो सुबह उठा शांतम जी 91 में, मगर 99 साल था वो टाइम उनका. अच्छा. तो बड़ी कुछ नहीं था वो टाइम, मगर वो उठा. हाँ, भगवान को पाँव पड़ा, वो बाथरूम में गया इसके लिए. हाँ, तो उसका पाँव सटक गया, तो सिर पर दीवार लग गया, तो उधर ख़त्म हो. नहीं तो 5-6 वर्ष और निकलता था. फतेहलाल जी? फतेहलाल जी जो टेंशन में गया. क्या बात का टेंशन? टेंशन का ये, मैं कोल्हापुर से आया. हाँ, इधर ऐसा बनाया और ये इसका सत्यानाश हो गया. और मेरा नाम अभी कम होने को लगा. हाँ, ऐसा नहीं तो
जैसा विषांतरम का नाम है तैसा एस फतेलाल लोग करने का एस फतेलाल की फिल्म आया। हाँ, प्रभात का ट्रेडमार्क देखेंगे तो एस फतेलाल की फिल्म आया। मुस्लिम तो बहुत करने का, वो मुस्लिम खुद था, पर मराठी भी लोग तो टेंशन लिया उनने। मेरे बच्चे भी बड़े नहीं, छोटे छोटे। हाँ, ऐसा वो लोग का। और जो केशव ड्राइवर थे, उनने पर्वत बंद होने के टाइम 2 फिल्म निकाला कृष्ण के ऊपर। हाँ, शांता को उनने काम दिया था। हाँ, तो दोनों गिर गए थे। तो वो भी 95 वर्ष तक थे और दामदा के इधर भी गुजर गया। दामने ने संभाला था उनको कि उनको आवरत नहीं करके ऐसे। और कुलकर्णी का तो बहुत फैमिली अभी है। हाँ, बड़ा फैमिली। जिस दिन प्रभात फिल्म कंपनी बंद हुआ था, हाँ हाँ, कैसा था वो दिन जैसा ऐसा लग गया बहुत बड़ा बाढ़ आके सब चला गया, ऐसा दिन में लगता था। तो पिताजी को काम नहीं, पगार बंद हो गए। हाँ, और सब लोग का नोटिस हाथ में लेके पगार लेके मुंह छोटा किया, अभी वो लोग कभी दिखेंगे नहीं, ऐसा हो गया था वो टाइम। तो सब लोग बोले ऊपर वाला है, फिर शुरू हो जाएंगे। तो वो बोला कि ये कोल्हापुर में क्या करेगा, बम्बई जाएगा। तो बम्बई जाने के टाइम ये करोड़ रोड से आया, तो वो टाइम पिताजी कपड़ा लेके इधर से चला था। ये 5 जन घोड़ा बग्गी से ठहरा था, इधर देखता था जमीन। तो पिताजी बोला क्या देखते है? बोले हम कोल्हापुर से आए, हमको ज़मीन मांगता है खरीदी। हाँ, तो बोले इसका मालिक किधर है? पिताजी बोला कि मुझे बग्गी गाड़ी में बैठो, मालिक के पास लेके जाता है। तो उधर लेके गए। तो पिताजी वो बोला कि देने का है मुझे ज़मीन, इधर कुछ पिकता नहीं, अनाज होता नहीं, तो कितना लेंगे? तो वो 32 एकड़ नहीं लिया। तो पिताजी बोला कि मुझे इधर काम को ले। तो बोले हम लोग आएंगे तो हम आपको पता दो, हम तुम्हारा हम बुलाएंगे। तो वो टाइम पिताजी बाल गंधर्व नाटक कंपनी में काम करते थे। तो गंधर्व बोले प्रभात फिल्म कंपनी में बुलाया। बोले कैसे जाने का क्या? तो उन्हें चिट्ठी दिया। पिताजी आया, चिट्ठी दिखाया, तो ज्वाइन हो गया। तब से हम लोग इधर ही है। तो 32 साल चला था वो टाइम। हाँ, प्रभात फिल्म कंपनी का गोपाल कृष्ण फिल्म चला था। हाँ, तो वो टाइम थाना है बम्बई के बाजू में, उधर से बहुत गाय लाया था। हाँ, उसने भी वो फिल्म में बहुत अच्छा काम किया। तो इधर बहुत लोग लंबे से प्रभात फिल्म कंपनी देखने का आने का, अंदर आएंगा ना तो मट्टी उठा के पाँव पड़ने का वो मट्टी को। हाँ, वो गोपाल नगरी से हो गया, पर्वत नगरी नहीं गोपाल नगरी हो गया वो फिल्म की। हमारे पिताजी मुझे बताया था कि जब भी उदय काल का शूटिंग चला था कोल्हापुर में। हाँ,
तो वो टाइम शिवाजी के साथ कुत्ता रहता है, ऐसा सचमुच हो गया। हाँ, तो विचार करने को लगा कुत्ता किधर से लाने का। और वो भी मैं घोड़े में बैठेंगा, शांताराम जी बोला, हाँ, वो घोड़ा और मैं जाएंगे और मेरे पीछे कैसे आएंगे। हाँ, तो दूसरा दिन सुबह स्टूडियो में, मंगलवार में स्टूडियो में कुत्ता आया। हाँ, वो शूट के टाइम घोड़े से शांताराम जी चला, उसके पीछे पीछे चला, तो 6 महीने उनके पास था वो कुत्ता। और जब भी पिक्चर कंप्लीट हो गया उदयकाल, हाँ, और लगने का, तो वो टाइम से गायब हो गया। हाँ हाँ, कुत्ता गायब हो गया। हाँ, कुत्ता गायब हो गया, किधर गया मालूम नहीं मुझे। ये शिवाजी ने भेजा था, शिवाजी महाराज ने भेजा था फिल्म बनाने को। हाँ, कुत्ता भेजा। कुत्ता क्या नाम था उस कुत्ते का? वाघ्या। वाघ्या तो शिवाजी का था। हाँ, उस कुत्ते का क्या नाम था? ये कुत्ते को वाघ्या बोला, वो ये भी वाघ्या बोलते थे। बोलते। ये लोग सब महाराष्ट्र फिल्म कंपनी बाबूराव पेंटर के पास थे सब। आप कभी देखे हो बाबूराव पेंटर? मैंने बातचीत किया, क्योंकि शांताराम जी इधर से गया ना। हाँ, तो शांताराम को बॉम्बे से इधर लाया फिर वापस एक बार से, कि सब मिला के बैठे, ओ ऐसा मत करो, हाँ, मेरे पास कैसे होते तुम 5 बच्चे जैसे, हाँ, इधर भी वैसा क्यों नहीं रहता। वो टाइम मैं शांताराम जी को मिला, पाँव पड़ा उनके। हाँ, तो वो बोला अरे बड़ा होने को लगा तो कारण। तो वो टाइम उनके साथ बाबूराव पेंटर थे। हाँ, उनकी ऊंची बहुत छोटी थी। हाँ, और शर्ट और धोती पहना था और जैकेट डाला था, बड़ी दाढ़ी थी। हाँ, आँखें मलमल जैसे आँखें सुंदर थे ऐसा। एक रील फक्त वरती आहे, एक रील वरती आहे। ठीक है सर, लोकेशन देता हूँ। मिला? ते हिच्याकडे वरती जाऊन फक्त काढून स्टील्स निकाल के लिए दिया है। बाबूराव पेंटर तो यही 3 फिल्म है हमारे पास। ओरिजिनल वन नाइट्रेट बेस, थर्ड जनरेशन। And the original? Originals they are not there now. They are spoiled actually. Completely. Somehow we can copy this. Maybe this is silent. So many use of this sound. The older the film is, the better for an archive, a museum. The original word for museums and archives is Ajaib Ghar, House of Wonders. So I added to that thing. So I renewed the kind of correspondence with all the people that we knew might have nitrate material, not just silent but early sound also. And this was one of the leads which the archive knew about for more than 10 years, in the 80s itself. Because Mr. A.V. Damle, the father of Anil Damle and Anantrao Damle, who was the direct son of V.G. Damle. Prabhat, he has been very active in preserving the Prabhat legacy and so on, you know that. They're all from Kolhapur, that family, all the Prabhat people, Fatela, Daibar, everyone, Shantaram, they're all from Kolhapur and they're all from Maharashtra Film Company originally.
So they knew that one family in Kolhapur called Vankudre family, which incidentally is also the surname of V. Shantaram. V stands for Vankudre. They told me that definitely we will get something from this family. Only the previous negotiations have failed for different reasons, maybe the price or whatever. I was prepared to pay any price which I can within the archive rules, because we'll never get a chance again. The rumors were that there were at least 10, 12 big trunks, tin trunks, full of nitrate material. We found all of them. Then I wrote to that family, Dandiram Gopal, I remember, was the father's name, who had died a few years before. He had 4 sons, and now they were willing to give it, because nitrate, different people had convinced them that it's rotting, decomposing, and B, it might catch fire anytime. And they were worried that, that it was a proper Vada kind of house, the wooden thing, and it'll burn. And they told us that when they were kids, they were already themselves in their 50s, or even one of them 60 plus. When they were kids, they used to use this strips of film, take it out, tear it and burn it like firecrackers. And not just at Diwali. Not just at Diwali time. So the father, Dandiram Gopal Vankudre, he got the film bug. Films were being made all around in Kolhapur. The Maharaja of Kolhapur at that time was very interested in filmmaking, and he would lend his elephants, his stables and his palace for shooting. Yeah. The only thing was that when he turned up for the shoot, he became the director. Whatever he said had to be done. It was a quid pro quo. Anantrao Damle told me once that they used to get quite irritated with that, because he had some strange ideas of framing and so on. And they would take the shot and consider it wasted footage and reshoot it after he's gone. And then we turn up there and we find those tins under the staircase. In every old house there's some staircase going up. So those tins are lying there, and there they are. This won't will be useful to you, but as the tins were being trunks were being taken out, a cobra came out, and someone said, "Wait, don't move! It has come back." It was like a proverbial legendary cobra guarding a treasure. And that cobra will release its treasure only to the right person. It will never surrender it. That's the myth. So I said, wow. Which are in the second or third wheel with Yama. But anyway, there were enough material in those tins, and we brought them back. We could ultimately save only 3. Sati Savitri and Murliwala, both made in 1927. And Maya Bazaar, we have recently found out, was made in 1921 and reissued with the same title in 1925. So that's the earliest Maharashtra Film Company. You were asking about the logo, no? Until 1919, 1920, Falke in Nasik and Mudaliar in Madras, artificial lights were not used much. They were just bouncing the light and using daylight. With Babura Painter's films, the earliest example we have is Maya Bazaar, which was made in 21, and the print that we have is a 25 reissue. Then you begin to see artificial lighting in Indian cinema for the first time. Proper artificial lighting, controlled. And here deliberately also the torches are placed in such a way, those mashals. This would, without the scratches and so on, would be amazing to look at, these kind of long shots. The quality would be quite different had we got a better print to make prints out of. This was the one surviving nitrate print. That also, as I told you, only 3 reels and not the entire 7 reels of the film. The original film is probably 6 or 7 reels.
उसको जब पता चलता है कि something is going to happen, है ना? Yeah, so she, accompanies. And she takes the permission of the parents. You know, that's an elaborate scene. You know, getting into, constructing a script with lots of detail, which Phalke never did. Phalke did tableaus. You know, he never worked out in his films in between moments. So the shrap is coming through, the huge log of wood has fallen on him and he's dying. And Sati Savitri, we actually have the original poster upstairs. Fantastic color. Oh, yeah. And this is very prominent. I mean, it is not from the film. It was a painted lithographed poster. We have this. But it's a similar image. Similar image. Yum. On the buffalo. Right. She's taking away her. So. Yeah. So what happened when government took the Prabhat studios, they wanted to keep some of the stuff. That was maybe one of the understanding. So they had a core group of technicians who were from the Prabhat days. Some of the light boys, and even they had some of the equipments also. There was an outdoor shooting van, and if you remember Admi, Manus, that picturization of the song in the jungle was going on. There is a van is there. And that van was there very much, Prabhat van, Ready? Silence! Go! 37H. आले तुमच्या मागोमाग. And here, behind this old canteen, there used to be a property thing. Shed. And in that one, in the top, that if you remember, you have seen Amar Jodi, there is a film. The whole film is shot in a ship. And it's sort of boat, sorry, not ship. And that boat was there, they kept it tied up in the ceiling, because they could not, it would occupy a lot of space below. So that was a kind of a boat, made, I'm sure, fabricated by the people, art department here. One thing which I really miss is, which I've seen it in the early days, it was with the camera department. That is these two dolls which were used for special effects of the last
dynamite sequence in Shejari, in The dam. Padas, dam bursting sequence. It was done partly by miniature and partly. So there's two characters, Jagirdar and Mazhar Khans. There are two dolls, and that was kept in the camera department, I remember distinctly. And they were kept in a case almost like a snake charmer's box, dabba, like the cane things, And the camera department at that time wanted to be kept with them because they wanted to use it for special effects teaching. And later I asked, nobody knows where it is. But it's very important historical item, that if you've seen the film and, you can link it up. You can see that very cleverly it is done, between the real person and the doll. When it actually bursts and these people getting exploded, it is dolls, so that kind of curio things which were part of the heritage of the studio, which was there, I remember that was there till the 70s. I don't know what time it got disappeared. आपण दोघं आता चिरकालचे शेजारी झालो. The students, some of them could use them as property without knowing the historical importance of that thing which they are using it. But later, of course, some people came to know can relate after having seen the films, especially the Vithoba statue from Tukaram. देवाला तरी आम्हाला दूर नव्हतं तरी आम्ही काही देवाला सोडायला तयार नाही. फुटो हे मस्तक पितो हे शरीर नावाचा गजर सोडू नये नाशिवंत देह झाला तरी भंग तरी कीर्तन रंग सोडू नये. विठ्ठल 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 विठ्ठल. There used to be a Jula in the Shantaram pond. The very fact you call it Shantaram. There is a beautiful pond, I don't know where if you remember Santukaram, when he dips all those abang, into the water, and this goddess Lakshmi, somebody comes and picks it up. That was shot in that pond. This Shantaram pond? But that was a water and typical village type of pond with steps and stones. And just adjacent to that, there was a Jula. It was also there, I don't know when they renovated that place, And that Jula is historically important because that was the place where the romance with Jayashree, Shantaram and Jayashree started. And she was sitting in the Jula. There was an unwritten agreement at that time that none of the partners, one of the things is they should not have an affair with the heroines. If you have an affair and want to continue, then you have to quit. So it happened with the earlier partner called Daibar. He was a cameraman, Keshwarao Daibar. He fell in love with that old actress of Angani Kankan. Yeah. Called Nalini Turkat. So he had to leave after him. And the next person to leave was Shantaram because he
fell in love with Jayashree. Jayashree was acting in Padosi, that is Shejari, in the Marathi version, her first film. So naturally, as per the unwritten agreement, and it became too much for them, because they have to set an example to others, that kind of, they should not have an affair with the heroines. Because then you lose the dignity of that relationship, of the studio discipline. That's why immediately, because Shantaram fell madly in love with her and she wanted to marry her, naturally he had to quit. So that was one of the reasons which, by that time he had also decided he wanted to be independent. He decided to goodbye to Prabhat and go to Bombay. And that was a big shock to them, because Shantaram was one of their pillars, of creativity. Actually, one of the downfalls, it started from that time. They couldn't find something to fill up the gap in terms of creative people. Of course, people like Badekar, Vishram Badekar and Sadana Madhikari, there are a lot of people who got trained under Shantaram, but nobody up to that. So that is why there is a big void. Everybody was trying to cope up with that. So it had a psychological impact on every technician. The films kept on flopping one after the other. Ram Shastri is the only one which clicked. Then they went all out like the Bombay films, like out and out commercial. That they couldn't, because somehow they were not temperamentally inclined to make that kind of films, knowing the history of that. So that is why they couldn't adjust, because they were doing it not consciously or with full heart. They wanted to do it for survival. And that didn't click. And that also, so ultimately it has become a complete, they couldn't cope up with the cost from their abilities. And that is why it fell apart, and it changed so many hands. They were just running it. Finally, thank God government, otherwise it would have been a real estate now. Buildings, lots of buildings. the way the things were going on. इसको थोड़ा हाइट दे सकते हैं प्रभात को थोड़ा हाइट वो है वाले जी रिफाइंड लेस नहीं देगा And next day when you come back, everything's back to normal. All your dialogue tracks, everything's in sync. Okay. So that's called the Damle effect. I don't know if it's true or not, but so Damle because he was the recordist too. They say that Damle watches
over the sound studio कि mixing ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है. If someone is not taking work seriously, he kind of lashes on. I have heard a version of that. So now. सच बताने का तो ऐसा है कि हम बचपन से देखते हैं तो भूत है, पर वो दामले का भूत नहीं, दामले का सर्प है. दामले सर्प करके घूमता है सब जगह. सब लोग बताए इधर देखा, हाँ उधर देखा, हाँ मैंने हॉस्टल के पीछे कितने दफ़े देखा. हाँ तो मैं अभी इधर कपड़ा सुखाने को डालता था, 10 बरस हो गए. तो मेरे पाँव को, पायजामा को उसने जीप से ऐसा किया. मैंने देखा तो घबर गया मगर मैं हिला नहीं उधर से. तो ऐसे करके वो चला गया. मुझे वो दाम दे सांप सब जगह इधर घूमता है. तो अच्छा, हॉस्टल के पीछे क्या हर जगह मिल जाता हर है? जगह दिखता है. पर आज तक आप लोग ने भी सुना रहेगा किसको काटा नहीं इधर. बस रखवाली करते हैं सब. हाँ रखवाली करता है कि मैंने ये कमाया, हाँ वैसा रहना चाहिए. और उनके लोग भी आता है जाता है. और संग्रहालय बनाया, उसमें उनका स्टैचू रखा. मैं भी उधर जाता है, स्टैचू को नमस्कार करता है. हाँ ऐसा हमारे चले रहता है. इन्होंने पूरा ऐसा दिया है, सिनेमा धंधे के महाराष्ट्र सिंह मतलब लॉयन. प्रभात फिल्म कंपनीचे आद्य संस्थापक कैलाशी विष्णू गोविंद दामले यांनी इसवी सन 1929 साली कोल्हापुरात प्रभात फिल्म कंपनीची स्थापना केली. संस्थापकाच्या अंगातील सहिष्णुता, कर्तबगारी आणि धैर्य या गुणांनी त्यांनी प्रभात कंपनीला सगळ्या भारतखंडात आजचे मानाचे स्थान मिळवून दिले आहे. त्यांची स्फूर्ती म्हणून त्यांचे सहकारी संस्थापक श्री कुलकर्णी व श्री बाबुराव पै यांनी हा पुतळा उभारला. तारीख 5 जुलाई 1946. और नीचे उनका ये दिया है जन्म मृत्यु का दिया है. जन्म 4 अक्टूबर 1892, मृत्यु 5 जुलाई 1945. क्या है सिनेमा धंधाती महाराष्ट्र सिंह, मतलब सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री के लॉयन. फिल्म इंडस्ट्री के लायन. पहले तो किसी को इतना कुछ ये नहीं हुआ, पर बाद में जैसे जैसे दिन निकलते गए, बरस निकलते, फिर उनका महत्व समझने लगा फिर लोगों को. अच्छा. हाँ जब तक ये प्रभात स्टूडियो था ना, तो इसका महत्व उस टाइम भी लोगों को किसी को समझा नहीं. जब वो गवर्नमेंट ने ले लिया प्रभात स्टूडियो और उसके बाद में फिर वो यहाँ के सब जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह जो थे, तब उनको इसका वैल्यू समझ में आया. जब था तब नहीं था उनको कुछ वैल्यू इसका.
2 action ये नहीं चाहिए इसको ये ट्रैक को कुछ नहीं चाहिए रे आया यार ब्रेक स्टॉप रे बॉस करेंगे Dale, dale, complex. कैमरा भी पीछे होता था क्या सुपरवाइजर मिस्टेक डाला मिस्टेक डाला ना काच सत्तर क्लोजअप लेता आज तेरे हाथ में
पहले यही था कि मैं सिर्फ जानना आता था कि हाउ वाज इट वर्किंग फॉर प्रभात और लाइक हाउ वाज इट इन दोज डेज टू मेक फिल्म्स। और इस बीच क्योंकि ये लोग फिल्म स्कूल से नहीं आए ना, इनका तो पूरा एक अप्रेंटिसशिप का सिस्टम था। तो इन लोगों ने खुद क्राफ्ट कैसे सीखी और मतलब क्लाइंबिंग अप द लैडर। और and since Mirskar ji is used to be a gaffer for Prabhat, which is a like big position एक स्टूडियो के लिए, तो उनके आगे फिर इन्फ्लुएंसेस पता चले लाइक कैसे उस टाइम यहाँ पे कुछ थिएटर्स थे, वेस्ट एंड थिएटर, और जहाँ पे अपने ब्रिटिश फिल्म्स और अमेरिकन फिल्म्स आते थे। सीधा हमें सीधा जाना ऊपर से फ्लाईओवर से। एक्चुअली समर्थ, ये तो बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है हम सब स्टूडेंट्स का कि जब हम कैंपस पे आते हैं ना, तो मतलब हॉस्टल रूम से चलना, मेन गेट तक जाना, ये जो जर्नी भी है ना हमारा, ये जर्नी भी एक तरह से एक मतलब हिस्ट्री की शैडो में ही हो रहा है। मतलब हर कहीं भी हम चले हैं, ये सब जो भी पाथ्स हैं, रास्ते हैं, उन सब पे इतना कुछ हो चुका है और वो प्रेजेंस हम फील कर पाते हैं। और ये मेरे ख्याल से सबके लिए कॉमन एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे याद है लाइक शुरू से ही ऐसा कुछ एक सिर्फ फीलिंग था, मतलब कि यहाँ पे कुछ है जो बोल रहा है कि मेरी कहानी बता, मतलब इस तरह से ना। स्लोली फिर हमारी इससे लोगों से बात होती गई और कहानियाँ लोगों से मिलते गए, और तो उसको एक फॉर्म मिल गया अपने आप ही। और ऐसी कई कहानियाँ, मतलब इसमें से हम एक स्टूडियो को लेकर ही कुछ करना चाहते थे, मतलब क्योंकि स्टूडियो है वो अभी तक बना हुआ है उस तरह से ना, वो बचा रहा। मतलब तो मेरा प्रभात का कुछ बताना चाहिए आपको? हाँ हाँ, जो जैसा आपका मन करे। तकलीफ होगी आपको? सुबह हमारा डिपार्टमेंट है, कुलकर्णी और ये किशन राव, ये मैं, ये बोले, परदेशी, राम प्रसाद, इसमें कोई नहीं है, सिर्फ मैं। कोई और नहीं है? कोई नहीं। क्या है, काम कोई छोटा नहीं होता, आदमी छोटा होता है, समझे ना। काम
छोटे आदमी से बड़ा काम करके लेने का वो। अभी मैं छोटा था तो मैं बड़ा काम लाइटिंग का, मेन फोटोग्राफी का प्रिंसिपल है लाइटिंग। अगर वो अच्छे नहीं हुआ तो आपकी फोटोग्राफी क्या। उस वक्त फोटोग्राफी का ये था, सिंगल शैडो बेस्ट फोटोग्राफी, डबल शैडो टॉलरेबल, थर्ड शैडो बैड फोटोग्राफी। ये प्रिंसिपल था। अभी भी कुछ ऐसा ही है। अभी मैं आप क्या, वो छोटा कैमरा लेके खंभे पे भागते हैं, वो लाइट पड़ा है नहीं पड़ा है, क्या है लाइट, क्या होता है, क्या किसी को पता नहीं क्या करने का। लाइटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लाइटिंग देने का वो बहुत ही ये है। लाइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ये राव इनके हमारे जमते भी बहुत। अच्छा। नर्टिकेट नहीं था मगर अंग्रेजी बहुत अच्छा। अच्छा। बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा। तो हम अंग्रेजी उनके पास सीखे। अच्छा। राव साहब और हम दोनों पिक्चर देखने को जाने का वेस्ट एंड में और आते आते डिस्कशन करने का। वो फिर ऐसा किया, वो सब देखते समय याद आता है ना। पिक्चर जब देखेंगे, कितना पिक्चर देखा है हमने, बहुत पिक्चर्स देखा, बहुत यानी बहुत, और अच्छे पिक्चर्स। सब गवर्नमेंट ने लेने के बाद सब लीलाव करके बेचा, तो जूना बाजार में लिया। तो प्रभात का तुकाराम पिक्चर शूट किया हुआ कैमरा उसने जूना बाजार वाले ने लिया तो ले लिया। वो कटोरी छोटे ये होते ना, उसके ऊपर बैठ के एक आदमी भाकर खा रहा था उसके ऊपर, कैमरा के ऊपर बैठ के। और प्याज फोड़ा, कैमरे के ऊपर फोड़ा। क्या बोला उससे हम निकले, बिल्कुल निकले। मैं और मेरा साथ एक आदमी था राव करके, दोनों अरे चलो बाबा, नहीं अभी देखने को नहीं होता है। अभी 25 वीक पिक्चर चला हुआ उसके ऊपर, वो उसके ऊपर प्यार खा के भाकर खाता है, क्या करने।
देखा है शाम चाहिए, देखना चाहिए बाबा, कोई समझो न समझो देखने का। मैंने तो कितने फिल्म इंस्टीट्यूट में समझता नहीं था, मगर देखने का ऐसा है, देखने से बहुत सीखता है आदमी। सही बात, देखने से सबसे ज़्यादा सीखता है, और वो ऐसा करने का उसको इंस्पिरेशन मिलता है। अरे वो नहीं, वो शॉट ऐसा लेने का। एक पिक्चर था, कौन सा, क्या नाम ही नहीं आता, एक शॉट लिया था कैमरामैन ने, रशियन पिक्चर था, हमने देखा था। तो बस आती है, चढ़ती है, उनको लेके कैमरा अंदर जाता है, वो सीट ढूंढते ढूंढते ये आता है, बैठता है, बस चली जाती है, वो कैमरा उधर। Cranes are flying. Cranes are flying. The cranes are flying. कौन सा? Cranes are flying. हाँ, क्रेन्स आर फ्लाइंग, करेक्ट। देखा आपने? अरे है कि नहीं, ऐसे ही शॉट है ना वो सबसे फेमस शॉट है उसका। संभाल के रखा है। क्या? कितने दिन से मैंने उसको संभाल के रखा है। बहुत सुंदर है, मतलब ये कब का है? एक इसको पीरियड नहीं है, इसको पीरियड नहीं है, प्रभात का बिगनिंग का है। बिगनिंग का है। एक औरत अपना पुलिस चौकी है ना प्रभात रोड के, उसके सामने के पीछे बाजू रहती थी। अच्छा। शांता भाई। कहाँ खींचा था ये फोटोग्राफ? टुडे भी लिया था, लाखारनी का सेट था। अच्छा। लाखारनी या आर्चेस वगैरह ऐसा किया था, उधर बैठने के लिए जगह था, बिठाया, फुल साइज प्लेट भी एक्सपोज किया। अच्छा। एवरी टेक्नीशियन शुड बी लिटरेटेड, ऐसा हमारा एक ये था प्रभात का। प्रभात हम सब का। पच्चीस वर्ष सचमुच ऐसा लंबा समय है। ये वक्त कोई भी छवि में ढल सकता है। यदि एक चेहरा ढूंढने लगे, दूसरा मुस्कुराहट के लिए सामने आ जाता है। इन दृश्यों में खालीपन का एहसास है। यहाँ पे अंतहीन विदाइयाँ हो चुकी है, हो रही है, होते रहेगी। There's another person who is God for almost all of us. God for almost Hrithik Ghatak. So when Hrithik Ghatak comes to Film and Television Institute of India, another very powerful form of experimentation emerges. Now, this is the absence in this festival. Ghatak himself and his students, Manikal, Kumar Shahani,
John Abraham, who are the most powerful innovators in the late 60s, early 70s, who within the framework of the feature film, fiction feature film, produce a very, very intensely powerful form of experimentation. No, he came as a guest. We had a retrospective of his films up to Komal Gandhar. No, Suvarnarega was just completed. First session was only of his films because he came specially with whatever films he made till that time, Komal Gandhar. And then Suvarnarega, I don't think it came in the first round. It came later, It was not ready, the print. So second, we used to come 2 or 3 times often, and then finally Jagat Murari persuaded him to take up a assignment as he was given the official charge of vice principal. And that's why he didn't want to take a regular job because he was making some films in Calcutta and didn't want to leave that and come here. But he was very much interested to interact with the young students. And the greatness of Ritwik is perhaps only one of the very few filmmaker who is an equally good teacher, a wonderful teacher. Unlike other filmmakers, they are good in their work, but when it comes to teaching, it's a totally different ball game. It's not that a great filmmaker can be a great teacher, but the other person I remember was Eisenstein, so that you can put him in that category of a great filmmaker and equally a great teacher, So that was the greatness. I wish we had that kind of personalities, কিছু না অতি সহজ জলবত্তর হলাম থাকতে এসছি আমি শুনতে গেছি চরিত্র পাল্টে নিয়েছি চাকরি জড়াবো একখানে এ পাস করেছিলাম করিনি একখানে ছেলে পড়ানো অভ্যেস ছিল রেকর্ড আছে রেকর্ড হ্যাজ Thank God that is the world of difference which Gatak brought it because of the time he spent in this place. And even now, I think that reverberation is continuous, that. हाँ, घटक साहब के पास किस्सा नहीं होगा, बस बातचीत हो गया था, हाँ, तो मिथुन चक्रवर्ती, हाँ, वो स्टूडेंट थे, तो पीछे से बाजू से वो बोतल धीरे से निकाल के पीने वाला था, हाँ, दारू पीने वाला था, मिथुन चक्रवर्ती, हाँ, उन्हें पकड़ा हाथ, क्या नहीं, छोटा लड़का रह के तुम ये करता है, तो वो बोला कि नहीं वैसा नहीं, हाँ, वो घटक बोला कि डांस मत करो मेरे सामने, हाँ, बोलो अभी उसको तुमको क्या सजा दूँ, हाँ, बोले सजा क्या देता है, हाँ, बोलो कपड़ा उतारो और गेट के तब भाग के आओ इधर, तुमको दारू देता है, हाँ, वो अंडर पे रख वो भाग के आया, हाँ, गेट के उधर से फिर पेड़ के इधर तक आया, हाँ, बोला कि ये कांच का गिलास में दारू दिया है पियो और वो तुम बहुत गलती करता है। मिथुन को बोला क्या कि तुम गुरु के सामने दारू पीता है, हाँ, तो मिथुन चक्रवर्ती बोला गुरु ने दिया तो मैं पीता है, हाँ, ऐसा कोई किस्सा हो गया था। There is a form of a very serious
thinking in both in the form of practice, in the form of structure, that began in the school. And the school, like almost all over the world, becomes an extraordinarily fertile place for experimentation. They are negotiating with the state, they are subverting the state and producing these kind of films. Pretty much, I would say, what Sudev and Shastri and others are doing. They are working within the state patronage, but negotiating it and subverting it. The Film Institute also becomes a similar zone because of Gautam and then other filmmakers. It also becomes a similar zone where the state is funding films, and you have filmmakers who are completely, hugely transforming, using that space to produce different narratives. Somewhere, at some new moon, we shall learn that sleeping is not death. Hearing the whole earth change its tune. Like your parents.
एक बस. I'll just give you a brief history. Okay, the institute was set up with the purpose of training technicians for the industry. Okay, this was the original purpose of the institute. Then there was a commission called the Khosla Commission, appointed in 1971 or 72, which said that if the government has taken the responsibility of running a film and television institute, Film Institute of India, then what is the objective with which the government is running, funding a film institute with the taxpayers' money? The government's responsibility of running the institute is justified only if the government is providing an alternative to the commercial cinema produced by the Bombay film industry. Because an institute run by the government cannot promote the same kind of, totally commercial and crass cinema which the Bombay film industry promotes. This is what the institute has followed since 1972. Because everyone was in agreement upon this point that the commercial film industry can survive by itself, and it is not the government's responsibility to fund it and promote it through the taxpayers' money. For whatever it is that we are fighting for the benefit of cinema, for the benefit of art, whatever it is only us who's going to act upon it. I think you should choose your words carefully. We have been in a situation of conflict and battle, so to say, for a very prolonged period of time now. The government wanted to do something for us, but they went wrong by asking the Hewitt people to draw this, because they have no idea of what cinema is. Sir, just one question about this whole privatization business. 99 it was McKinsey, 2000 it's a fee increase, 2003 to 2005 it's a number of self-financed short-term courses, and 2010 is a Hewitt report. We keep saying we are against privatization, but we do everything that is to do with privatization and disinvestment. What do you have to say on that, sir? We should not be under this ministry. We should have been under other cultural ministry. Next director should be from the film world. Deputy sir, I want to ask you, what is your stand on FTII? Why does ministry wants to make it a profit-making institute? We are not looking at it as a profit-making body. No, it has never been the mandate. If that is the case, why we have so many subsidized courses? In the 11th five-year plan, 2006 to 2011, it is very clearly mentioned that SR, FTI and FTI are very good institutes and the level should be raised to international levels. I'm quoting these words. And that with special attention to gaming, animation, other such new media on the lines of PPP. This National Center of Excellence, actually PPP basis pe karna hai. It's not SRFTA and FTI ke land pe. FTI ke land pe, sir. Either you take my word or you don't actually believe it. The problem is, sir, that we're still a media unit under the Ministry of INB. We're not even recognized as an educational institute. Okay, if you look at other educational institutes, 50 साल हो गए sir, Center of Excellence नहीं declare कर सकता है. What should be drawn? Somebody should answer us. Who can answer us? जिनका अपना कोई opinion है इन चीजों को लेकर के. ठीक है.
ठीक है, now we are sitting down. The chairman also wants to talk to you. थोड़ा बात करें. So there should not be any pressure on us when we meet, discuss and take a decision. Fine, sir. And if we take a decision under pressure, it will have no value. Right. Yes, sir. So from your point of view, I am talking, not from my point of view. Okay? क्या हुआ? कैसे? यार जबरदस्त की यहाँ पे कुछ ना कुछ भी 10-5 साल जाने के बाद में कुछ ना कुछ भी गड़बड़ होती है और कुछ भी तूफान आता है इंस्टीट्यूट के ऊपर में और वो तूफान में से भी फिर भी इंस्टीट्यूट बच जाती है। इसको एक शाप भी है और ये जगह को एक अच्छा भी है। क्या है शाम थोड़ा सा शाप कुछ भी गड़बड़ होता है और गड़बड़ होके कुछ चेंज होता है नया। जो प्रभात फिल्म कंपनी थी, प्रभात फिल्म कंपनी गई, प्रभात स्टूडियो हुआ, प्रभात स्टूडियो हो गया, फिल्म इंस्टीट्यूट हुई, फिल्म इंस्टीट्यूट में फिर टीवी ट्रेनिंग सेंटर हो गया, यहाँ पे टीवी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट हो गया। फिर बीच में एक एशिया स्टूडियो का एशिया इंस्टीट्यूट करके चल रहा था 84-85 में, लेकिन वो नहीं हुआ। वो क्या था? एशिया इंस्टीट्यूट करके उसका क्या था? वो भी यूनेस्को की तरफ से ऐसा कुछ होने वाला था। ऐसा तो बड़ा सा। हाँ, अभी भी तो ये बनाना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा सा। अभी ग्लोबल इंस्टीट्यूट अभी ग्लोबल इंस्टीट्यूट में अभी क्या होगा वो मालूम नहीं आगे। लास्ट ईयर में तो हुआ था ये पूरा। हाँ, का कंपनी वो तो अभी 2 साल के पहले जब भी मिनिस्टर आए थे उन्होंने बताया था एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट हो है, 56 एकड़ ज़मीन है, तो ऐसा उन्होंने भाषण में कहा था और इसको ग्लोबलाइजेशन बनाना है, करना है, होगा। अभी मालूम नहीं आगे क्या होता है। ये ज़मीन का ये है जो अच्छा काम करे, अच्छा ईमानदारी रहे, तो उनका अच्छा ही होता है। हाँ, यहाँ से तो बहुत लोगों की किस्मत खुल गई है। मैं भी तो यहाँ पे ऑर्डिनरी वर्कर करके आया था। ऑर्डिनरी वर्कर से मैं यहाँ तक आया हूँ। मेरी भी किस्मत खुली बोलने का।